हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टॉक मैथ्स। इसमें आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से 11th क्लास मैथ्स के राइट फ्रॉम चैप्टर 1 सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 वीडियोस मिलेंगे। उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। अच्छे लगे दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज सेट थ्योरी। 11th क्लास मैथ्स में सेट थ्योरी एक नया टॉपिक 10th के बाद 11th क्लास में लगता है हमको, बिकॉज इससे रिलेटेड कोई भी चीज 10th में हमने नहीं पढ़ी हुई होती है। सेट थ्योरी में एक टर्म आता है, सबसे पहला फर्स्ट टर्म इज सेट। देखिए, हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं। कलेक्शन, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। इफ आई से कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, आई से कलेक्शन ऑफ फर्नीचर इन दिस रूम, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, collection of all the capital cities of India. Among these collections, a collection of well-defined, distinct objects is a set. So that collection which have well-defined and distinct. There are two terms. तो well-defined और distinct. Objects well-defined होनी चाहिए और distinct होनी चाहिए। अभी मैं आपसे कहूँ a group of 10 most talented students of 11th class. So it is not possible to find most talented students. A group of 5 most talented batsmen of India. It is not possible to find. So the objects must be well defined. अब अगर मैं कहता हूँ collection of 10 natural numbers, well defined है, 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स लिख देंगे। अगर मैं कह दूँ collection of the letters of the word collection, collection of letters of the word collection, तो बड़ा इजी है, C O L जो भी लेटर्स हैं वो लिख देंगे। तो जनरली we represent the set by capital letters and the objects are written by using a curly bracket. For example, I am writing all the vowels of English alphabet, A, E, I, O, U. If I write a set of first 10 natural numbers, if I write the set of letters of the word collection, while writing the set, keep in mind that we don't repeat the elements. अगर कोई सेट हमने ऐसा लिख दिया कि 1 1 2 2 2 3, इस तरह से नहीं लिखना है। सेट में कैसे लिखना है? 1 2 3, डोंट रिपीट। इसको रिपीट नहीं करना ऑब्जेक्ट्स जो भी, और ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब आती है बात कि ये हमने सेट लिखा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट is done in 2 ways. First is roster or tabular form, or second is set builder or rule form. रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो ये जो लिखे हमने सेट, ये टेबुलर फॉर्म है। इसमें क्या एक एक एलिमेंट कॉमन लगा के अलग अलग लिखते जाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। अब जैसे ये है A इक्वल टू AEIOU, तो हमें दिखाई दे रहा है इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स आते हैं, 5 एलिमेंट हैं इसमें, और वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ऐसे इंडिविजुअल एलिमेंट लिखने की बजाय इफ आई गिव अ रूल so that anybody can write by observing that rule, those elements. That is set builder form या rule form. Set builder form मतलब उससे हम सेट बना सकते हैं। For example, set A
A will be written like this in set builder form. देखिए रोस्टर फॉर्म तो यही है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं इस तरह से x. x रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, x such that x is a vowel of English alphabet. अब किसी को हमने ये दे दिया सेट x such that x is a vowel of English alphabet, तो कोई भी लिख सकता है एलिमेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट. पता आपको कौन कौन से हैं? B x such that x is a natural number less than equal to 10. तो less than equal to 10 जो भी नेचुरल नंबर से लिख देगा कोई भी. x such that x is a letter in the word collection. ये हो गई अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म. जो भी एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है तब हम उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू. और सिंबल ये जैसे हम लिखते हैं ना ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, पी डज नॉट बिलोंग टू ए. कोई भी एलिमेंट उसका पार्ट है तो बिलोंग्स टू और पार्ट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग. अब हम बात करते हैं टाइप्स की. सेट कितनी तरह के होते हैं? तो सेट अपने पास हो गया क्लियर कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले है अपने पास फाइनाइट सेट, देन infinite set, then empty or null set, then singleton set, equal set, equivalent set. वन बाई वन एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे इसको. फाइनाइट सेट नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट. तो वो एलिमेंट काउंटेबल हो. जैसे अगर हमने एक सेट कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100, ठीक है, काउंटेबल है. x such that x belongs to integer and x lies between 2 to 9. Countable. Then there comes infinite set. Infinite set देखिए सेम 1 2 3 जो नेचुरल नंबर्स है, इसी को मैं एक साथ दे दूं एग्जांपल 1 2 3, बस आगे डॉट डॉट लगा दिया. It means infinite number of elements are there because total number of natural numbers काउंट नहीं कर सकते. x such that x belongs to R but x lies between 1 to 2. Between 1 and 2 how many real numbers are there? Infinite real numbers are there. Even infinite real numbers are there between any two real numbers. Between 1 and 1.1 infinite. Between 1 and 2 infinite. So this is infinite. Empty set or null set, it is represented by phi. तो एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो. जैसे सेट दे दिया मैंने x such that x belongs to n, x is more than 2 less than 3. बोलिए more than 2 less than 3, is there any natural number? No natural number is there between 2 and 3. x such that x is a real number and x square equal to -4. Logic. Is there any real number whose square is -4? No real number is possible whose square is -4. So such a set is said to be empty set, null set, void set भी बोलते हैं इसको, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं phi से. सिंपलीफाई, इस पर कोई ब्रैकेट ऐसे नहीं लिखना.
ये सेट बन जाएगा फिर, और you can represent empty set like this by using just bracket, don't write anything. Then there comes singleton set. So singleton set of even prime numbers. How many even prime numbers are there? Just one. X such that X is the Prime Minister of India, present Prime Minister of India. What is this? This is a singleton set containing only one element. Then there comes equal set. Now for equal and equivalent set, I am taking two examples. I am writing here A equal to 1 2 3, B equal to 2 3 4, C equal to 3 1 2 or 3 2 1. These three sets are there. By the term equal set, we mean that all the elements आर सेम. इक्वल तो है ही, दोनों में इक्वल एलिमेंट है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, और सेम भी है. देखिए इसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके एलिमेंट भी 1 2 3 है. ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो हियर ए एंड सी आर इक्वल सेट्स. और इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल. ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, बी एंड सी इक्विवेलेंट सेट. Even if I write anything else like A, B, C, numbers नहीं लिखे हुए, still A and B equivalent set. तो equivalent का मतलब number of elements are equal, not the elements are same. Same नहीं है, सिर्फ equal है. These are types of sets. आगे और subset और इसकी properties and operations on sets that we will discuss in the next video. For that, subscribe this and press bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.